पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान जी जवाबी कार्रवाई जी गूंज अड़ी हुई जो भारत ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी थी वियो। पाकिस्तान अमन जो ख़्वाहिशमंद आहे पर पंहिंजी ख़ुदमुख़्तियारी ते कंहिं क़िस्म जी सौदेबाज़ी न कंदो। India rebuffed Pakistan's very sensible and legitimate offers for a peaceful solution. And we saw how on the 9th of the 6th and the morning of the 7th, India launched their illegal attacks on civilians and civilian infrastructure in Pakistan, resulting in the martyrdom of men, women and children, the destruction of mosques and even damage to our dam. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीटीवी वर्ल्ड ऐं ख़ानगी टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त पाकिस्तान ज़िम्मेवार रियासत जो मुज़ाहरो कंदे 3 ॾींहंनि ताईं सब्र खां कमु वरितो। पाकिस्तान पंहिंजे बचाव में भारतीय अगराई जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। आलमी बिरादरीअ बि ज़िम्मेवारी निभाईंदे पाकिस्तान जी हिमायत कई। India continued with its aggression and has continued for the subsequent 3 days. They launched 80 drone attacks within Pakistan that were bravely and valiantly shot down, but that too resulted in the loss of life, of civilian life. And then we saw how last night, in a departure from everything that they had been stating, they demonstrated once again that India says one thing and does another. They said that they were conducting a limited strike against terrorist infrastructure. They've been unable to name a single terrorist that was killed in their attack. The next day when they were, I wonder which terrorists they were targeting in Karachi and in Lahore and other major cities across the country. And ultimately they did attack military installations along with our civilian cities using missiles. So their aggression has been on display. And Pakistan, in line with international law, after demonstrating 3 days of patience, has finally responded proportionately, responded rationally, and within the confines of international law under Article 51 of the UN Charter. We are exercising our right to self-defense. Pakistan has a right to defend ourselves. We've always prioritized peace, but not at the expense of our survival, not at the expense of our sovereignty, and certainly not at the expense of our dignity. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त भारत पहलगाम वाक़िए जी आलमी जांच खां छो लवाए रहियो आहे। पीपी चेयरमैन चयो त भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि जी पुठ भराई करे रहियो आहे। भारत लाॻीतो पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ जी हिमायत करे रहियो आहे ऐं भारत जाफर एक्सप्रेस वाक़िए जी मज़म्मत बि न कई आहे। भारत लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ जी हिमायत करे पियो। The international community has demonstrated great foresight. This time, unlike times in the past, they haven't gone along with every lie, with every fiction that was brought forward by the Indian side. India has sort of become the child who cries wolf in South Asia. If after every terrorist attack, without any proof, you're going to just blame Pakistan, eventually people are not going to believe you. हुन चयो त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जो दुनिया एतिराफ़ कयो आहे। भारत अगराई करे आलमी कानूननि जी भञकड़ी कई आहे। असां पंहिंजी सरज़मीन तां भारतीय जासूस कलभूषण खे गिरफ़्तार कयो। But it is India because their case is weak, because their case is unjust, because it is not based in international law, because they have no hope of succeeding at international forums, have time and time again, whether it's the question of Kashmir and their right of the people of Kashmir to self-determination through a plebiscite and India's obligations to international law through the UN Security Council and its resolutions. India has refused to abide by them. Whether it's the 2019 actions of unilaterally changing the status of this internationally recognized disputed territory and continuing with their repression and suppression of the people. पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो त पाकिस्तान भारतीय अगराई जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। पाक फज़ाया भारत जा 5 जहाज केराए तबाह कया। पाकिस्तान पंहिंजे दिफ़ा में भारत जे अगराई जो जवाब ॾिनो। समूरनि मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए ई कढी सघिजे थो। आवाम पाक फौज एयरफोर्स खे सलाम पेश कयां थो। पाक फौज जी बहादुरी ऐं कुर्बानीअ खे बि सलाम पेश करियूं था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असां जवाबी ऑपरेशन कयो त भारत 24 कलाकनि खां अॻु ॻाल्हियुनि लाइ तयारु थी वियो। भारत जा 100 खां वधीक ड्रोन
महसूस तबाह कया ऐं मुंहं जवाब ॾिनो। पाक फज़ा या उहे जहाज़ बि तबाह कया जिन खे कंहिं बि नाहे किरायो। ॿिए तरफ़ सोशल मीडिया ते पंहिंजे पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान ऐं भारत जंग बंदी ऐं ॻाल्हियुनि ते मुतफ़िक़ थियण खे असीं उन जी सिफ़ारतकारीअ जी फतह तौरु आजा कयूं था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान लगातार उन ते ज़ोर भरींदो रहियो आहे त ॻाल्हियुनि ऐं सिफ़ारतकारीअ जो रस्तो ई अमन जो रस्तो आहे। जंग, तशद्दुद ऐं जारियत कॾहिं बि को जवाब न आहिनि। असीं अमेरिका, बर्तानिया सूदो उन्हनि सभिनी मुल्कनि खे जस ॾियूं था जिन कोशिशूं कयूं। पाक फ़ौज ख़ासि तौर ते एयरफोर्स ऐं अवाम ते फ़ख्रु करण में ख़ुशी महसूस कयां थो।